Hey guys, what's up and welcome to episode 18 of Hogwarts Legacy। पिछले एपिसोड में अपन ने सेकेंड ट्रायल कंप्लीट किया था। बेसिकली गेम में 4 ट्रायल है एंड आई गेस चौथा ट्रायल जो है गेम के एकदम एंडिंग में होगा। तो ये चारों ट्रायल्स हमें क्या करते हैं कि जो भी एंशियंट मैजिक यूजर्स थे उनके पास्ट के बारे में बताते हैं। तो सेकेंड ट्रायल कंप्लीट करने के बाद हमें उसके एंड में ऐसा दिखता है कि इसाडोरा जो है वो अपनी एंशियंट मैजिक की पावर्स यूज़ करके लोगों का पेन हटा रही है। तो बेसिकली वो लोगों के बॉडी से पेन निकाल लेती है एंड वो जो मैजिक है, जो पेन जो मैजिक है वो रेड कलर का ग्लो करता है। बेसिकली जो रैनरॉक अभी यूज़ कर रहा है ना मैजिक, वो भी रेड कलर का ही ग्लो कर रहा है। ये सेम है या पता नहीं, बट ऐसा लग रहा है कि वो दोनों सेम मैजिक है। वो अब आगे मतलब डिस्कवर करेंगे अपन और स्टोरी को, तो तब पता चलेगा कि ये एक्चुअली सेम है कि नहीं। उसके अलावा अपने इस ये रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में ब्रीडिंग अनलॉक हो गया है। बेसिकली तुम जो एनिमल्स तुम्हारे उसे मल्टीप्लाई कर सकते हो ताकि तुम्हें और मटेरियल्स मिले अपग्रेड करने के लिए। अभी अपने पास एट द मोमेंट 3 मेन चीज़ें हैं जो करना है। एक मेन मिशन, एक सेबेस्टियन का साइड मिशन एंड एक असाइनमेंट। अच्छा, ये सेकेंड ट्रायल के बाद क्लाइमेट वापस चेंज हो गया। अभी अपन विंटर क्लाइमेट में आ चुके हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, हर ट्रायल के बाद शायद क्लाइमेट चेंज होता है, और क्लाइमेट चेंज होने के बाद एक बड़ा सा तुम्हारे सा गोल्डन बॉक्स आ जाता है जिसमें काफ़ी सारे मेन मिशन रहते हैं एंड फाइनल तुम्हारा ट्रायल होता है। तो ये गेम का बेसिकली स्ट्रक्चर है। तो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले अपन असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं, क्योंकि बम्बार्डा चाहिए। असाइनमेंट की 2 में से एक ऑलरेडी रैंडमली अपन एक्सप्लोर कर रहे थे, तो हो गया था कि जायंट पर्पल टोड्स को पकड़ना था। तो वो ऑलरेडी एक्वायर किया होता है। एक डर्ट क्लॉ करके कॉल, डर्ट डीरी कॉल करके एक दूसरा बर्ड है ये एक्चुअली, जिसे मैंने अभी तक कैप्चर नहीं किया है। तो अपन पहले उसे कैप्चर करने वाले ताकि अपना बम्बार्डा अनलॉक हो जाए, जो आई गेस आखिरी डैमेज स्पेल है, रेड कलर वाला स्पेल है वो। यहाँ पे मिलेगा क्या? बट यहाँ पे कुछ ऐसा मार्क्ड नहीं है। यूजुअली ऐसे पॉ का मार्किंग होता है कि एनिमल्स इधर है करके। एनीवे, सबसे पास वाला ये रहा, फास्ट ट्रैवल जाते उधर। आई गेस जल्दी अपने ब्रूम का भी अपग्रेड आएगा, क्योंकि ब्रूम का एक अपग्रेड अपन ने पहले ऑटम में किया था। अभी विंटर हो चुका है, तो मे बी नेक्स्ट अपग्रेड आएगा। और I've always said that travel broadens the mind. ये भाग रहे हैं। मुझे बैग इक्विप करना पड़ेगा। इक्विप नहीं है, वो इक्विप है, ठीक है। Confringo! अबे कंफ्रिंगो नहीं, लेवियोसो। शिट शिट शिट। Confringo! Crucible! Levioso! Assignment's all finished. एक और पकड़ लेते हैं। Look after you. सो इनको जल्दी से रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में छोड़ के आते हैं, उसके बाद क्लास अटेंड करते हैं। अच्छा, रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में भी अपने 3 रूम्स खुल गए, जिनमें अपन ये बीस्ट को रख सकते हैं। बेसिकली इन रूम्स को विवीरियम करके बोला गया। तो तुम टोटल अभी 12 अलग अलग स्पीशीज रख सकते हो टोटल। आई थिंक यहाँ पे जगह है, एक बार देखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे 3 ही स्पीशीज है।
तो ये जो डिरी कॉल, ये जो बर्ड्स है, इनसे जो भी तुम्हें चीज़ मिलती है उससे तुम सेकेंड लेवल के ट्रेड्स लगा सकते हो अपने गियर्स पे। फाइनल लेवल के ट्रेड के लिए तुम्हें ये बिल्लियों के बाल चाहिए होते हैं, इनको स्नीजल करके बोला गया है। एंड फर्स्ट लेवल ट्रेड के लिए तुम्हें इनके चाहिए होता है फर ऑफ स्किन के। सो बेसिकली ये 3 एनिमल्स तुम्हारे ट्रेड्स के लिए है। उसके अलावा जो बचे हुए सारे एनिमल्स हैं वो तुम्हारे गियर अपग्रेड के लिए। हर गियर को तुम 3 बार अपग्रेड कर सकते हो तो उसके लिए। एंड फाइनल अपग्रेड के लिए फिनिक्स लगता है। एंड मैंने फिनिक्स काफ़ी सर्च किया, मुझे मैप पे तो कहीं नहीं मिला। तो या तो अभी ये जो इनएक्सेसिबल एरिया है गेम में एक इनएक्सेसिबल एरिया है ये फिलहाल, तो या तो यहाँ पे हो सकता है या फिर कोई स्टोरी मिशन पे अपन को शायद फिनिक्स मिलेगा। किधर है क्लास, किधर हो रहा है? आई गेस ये क्लास अपन ने अभी तक अटेंड नहीं किया, ये नया क्लास है। अच्छा नहीं, बीस्ट क्लासरूम है, अटेंड किया है अपन ने, एक बार किया था। How nice to see you, my young friend. निफलर जो पैसे चुराता है, फैंटास्टिक बीस्ट वाले मूवी में था ये। Excellent work today. Class dismissed. Can't say I'm terribly. I take it you're ready to. I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. Okay. I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Nice and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. Well done. Now, let us put it into practice, shall we? Go ahead and try it on the pump. बॉम्बार्डा किधर लगा है? क्योंकि अब सारी स्पेल यूनिक है, अलग है, कोई भी डबल ओवरलैप नहीं कर रहे कि मैंने 2 बार लगा रखा है। ये तो मैंने यूटिलिटी के लिए छोड़ा है। अगर मैं फाइनल इस पे करूँ तो अपने अभी 2 अनफॉरगिवेबल स्पेल और ये एक बॉम्बार्डा डाल सकता हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ थर्ड वाला यूटिलिटी के लिए छोड़ता हूँ। इतने सारे स्पेल लगा के अपन कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बॉम्बार्डा करता क्या एग्जैक्टली? डील्स हैवी डैमेज ऑन इम्पैक्ट accompanied by an explosion that can destroy heavy obstacles and hit surrounding enemies. इसका डैमेज क्या है? बट कॉन्फिगरो से ज़्यादा है क्या? मुझे लग रहा है अपन को इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ये वाला स्पेल भी अच्छा खासा ताकतवर है। अगर एनिमीज़ को तुम कोई सॉलिड वॉल या कोई ऑब्जेक्ट से हिट कर सको ना तो वो अच्छा पावर देता है ये भी डैमेज। डुपल्सो इसका भी मैं उतना बड़ा फैन नहीं हूँ। एरेस्टो मोमेंटा बेसिकली चीज़ों को जो स्लो करता है ना, आई गेस इसके बदले में लगा लेता हूँ। तो ये वाला अपना काइंड ऑफ एक डैमेज वाली चीज़ हो जाएंगी। ये जो सेक्शन है स्पेल का, 4 स्पेल जो है, या कहाँ पे यूज़ करने को बोला इसने? एक्सप्लोडिंग चैम्प बोबंडा इज अ हैवी डैमेजिंग स्पेल एंड कॉज। ओके, Bombarda! Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Assured Nice. and in control.
जैसे बोम्बार्डा का अपग्रेड किया है, मेरे पास 6 अपग्रेड पॉइंट है। बोम्बार्डा causes a massive explosion blast with a massive area of effect causes an अच्छा एक्स्ट्रा ब्लास्ट। हाँ ये उठा लेते हैं। 5 पॉइंट अभी, वो मैं पॉइंट वही अनफॉरगिवेबल कर्सेस के लिए बचा रहा हूँ। Bombarda! Excellent. You have इसका it रेंज well भी in अच्छा है। hand. Hello, Hamora. खुल क्यों नहीं रहा है? अच्छा वो ग्रीन वाला। ये पहला लेवल 2 वाला लॉक है जो मैंने खोला है गेम में। कम लेवल वाला ग्लव्स मिला। एनीवेज व्हाट इज द नेक्स्ट मिशन? सो मेन मिशन पॉपी स्वीटिंग का है, जो बेसिकली मुझे लग रहा है पोचर्स है उनसे रिलेटेड होगा। तो पॉपी स्वीटिंग ने अपन को यही बीस्ट वाले क्लास में हाइविंग से मिलाया था, जो बेसिकली अपना माउंट है। तो तुम्हें याद हो तो कुछ एपिसोड पहले अपन जब मिशन कर रहे थे तो हाइविंग को कुछ पोचर्स से बचाया था अपन ने। तो वही है आई गेस, पोचर्स से रिलेटेड मिशन ये रहेगा। एंड ये वाला सेबेस्टियन का मिशन करते हैं। मुझे लग रहा है कुछ हो सकता है अनफॉरगिवेबल कर्स मिल जाए। अंडरक्रॉफ्ट तो अंदर है ना हॉगवर्ट्स के। भाई फरवरी मार्च अप्रैल ये सारी गेम्स है ना What are you पैक्ड है up to now? ऑलरेडी। जब आप ये एपिसोड देख रहे हो तब तक तो शायद एटॉमिक हार्ट्स के भी एपिसोड आ गए होंगे चैनल पे। बट एटॉमिक हार्ट चल रहा है, ये चल रहा है एक दूसरा गेम आने वाला है मार्च के स्टार्ट में ही, वूलोंग फॉलन डायनेस्टी करके, जो नियो के डेवलपर्स है। तो उसके लिए मैं काफ़ी हाइप्ड हूँ, क्योंकि नियो मेरा वन ऑफ द फेवरेट गेम्स है। नियो 2 जो था एक काफ़ी बढ़िया सोल्स लाइक बोल सकते हो, बट उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सोल्स लाइक से अलग भी है। उसके बाद मार्च में जेडाई सर्वाइवर्स आ रहा है। फिर अपना वो भी आ रहा है, कौन सा था, लास्ट ऑफ अस पीसी के लिए। तो ये कुछ बड़े गेम्स हैं, और भी मार्च में गेम्स होंगे जो मैं मिस कर रहा हूँ। वैसे अभी इसके साथ अभी फरवरी में वाइल्ड हार्ट्स रिलीज़ हुआ था जो मैं खेल नहीं पाया, बट उसका पीसी पैच उतना खास नहीं है। तो मतलब उसमें काफ़ी सारे स्टटरिंग वगैरह, तो मैं सोचा वो बाद में खेलेंगे। रिटर्नल रिलीज़ हुआ है जो पीएस एक्सक्लूसिव था पहले, वो भी बाद में अपन ट्राई करेंगे। एंड सन्स ऑफ फॉरेस्ट था जो मैं खेलना चाहता था, बट ऑलरेडी इतने सारे चीज़ें चल रहे हैं एपिसोड्स, तो फिर मैं वो डाल नहीं सकता बीच में। सन्स You'll ऑफ never फॉरेस्ट। believe what I've learned. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. इतना ही था क्या? अरे भाई And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you?
I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. ये बंदा उधर खड़े रह के सुन रहा था सब कुछ चुपचाप. I Eh? am not letting this go. सेबेस्टियन इतने गुस्से में कि फ्लास्क वास तोड़ के चले गए वहां से. Ominous, Sebastian Manuel. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Some references Sebastian mentioned in the book do worry me. I'm glad you understand. I hope Sebastian pursues this no further. But if you think he might, please let me know. It would mean a lot. खत्म हो गया मिशन या बाद में कंटिन्यू होगा ये. तो फिर अपना जो मेन मिशन था फायर एंड समथिंग वो करते हैं. फायर एंड डिवाइस. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. अरे गलत. Slice a dangling duck bog. Duck bog है किधर इधर आसपास. अच्छा ये रहा. अरे यार ये फिर से. पिछले एपिसोड में अगर तुम लोग को याद हो एक बग हो गया था. वही चीज वापस हो गई यहाँ पे अभी. मैं अपने स्पेल्स वगैरह कुछ भी यूज नहीं कर पा. मुझे लग रहा है वो उसके वजह से हुआ है क्या. मैंने जो प्लांट वाला अटैक यूज किया पता नहीं. कुछ अनोइंग बग है. वापस रीलोड करना पड़ रहा था पिछले बार भी. मतलब जितने भी स्पेल वाली चीज है ना जो भी माउस से होता है वो कुछ भी यूज नहीं हो पाता. Away! If those poachers come after my life. Time to go a little quicker. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did.
I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poacher spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Pinchos. A centaur. Tread carefully. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Hey. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Revelio. Still smoking. They can't have been gone long. Pelts. Poor beasts. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Why wouldn't they take their cages with them when they left? So ये जो गॉबलिन मेटल था ना, ऐसे ही कोई चीज जो ट्रोल ने अपने ऊपर अटैक किया था उस पे भी लगा हुआ था, और जो ड्रैगन ने गेम के स्टार्ट में किया था उस पे भी लगा Anything हुआ था. interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. How do goblin and poacher interests align? वो just को पैसे दे रहा होगा और क्या Definitely है? poachers. रैंडम creatures पैसे दे रहा though. होगा. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land.
Revelio. Ah, but a purse made it. The Ministry ought to relax their feelings towards the dark arts. Argus Totalis. You can feed a beast, or it can feed you, if you get my meaning. Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. तो ये टेंट अलग से बड़ा एरिया होगा। यप, ऐसे एक और टेंट अपन ने पहले यूज किया था गेम में। In Merlin's name? ड्रैगन, फाइनली ड्रैगन्स। उन्होंने कुछ पहना के रखा है। It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. That's a brilliant idea. Don't know what Victor was thinking, striking a bargain with him. Have you heard from your family? Has even of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Ah, they say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence is going to get me precisely what I want. Sickens me to work alongside any of them. Don't know how rapid it is. Ready to fight! Such Expelling. Incendio. Accio. Bombarded. What I wouldn't give to be a Demiguise right now. pass that fire whiskey over here. Just to learn to अब ठीक है? share. ओ यहाँ पे तो ये ड्रैगन शायद उन दोनों से भी Did ज़्यादा you बड़ा hear है। those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. Speak to them, please. What's going on down there? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? कैसे? अच्छा वहीं से जाना है मुझे लगा। हाँ। Look, they've got Revelio. Dragonite. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. यहाँ पे ये क्या चीज़ है? अंडा है क्या? ड्रैगन है क्या? Aloha Mora.
शायद ड्रैगन ने किया. All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Careful! That rope will want his back! Damn thing, you'll get it! Stop that! I hope your affairs are in order. Avoiding our problems. Coward! More clearly! The lamb returns to the wolf. अरे You're the one we're looking for, ain't you, friend? My boy. How unfortunate. You've made a mistake. If I study on the foliage, I'll never win one. No! Up for a minute dying, are we? You come to the wrong place, Jordan. Incendio! Much better. We don't have time. We need to free her now before more show up. कैसे करना है ये अपने बच्चा हो गया. I think ये पूरा जगह डिस्ट्रॉय कर देगी ये. Oh shit. अरे तेरे पीछे ड्रैगन तो देख ले. गया वो. ये पूरी जगह कोलैप्स होने वाली है. मैंने बोला था ना. This way. आई डोंट थिंक कि तुम ड्रैगन को या तो कैप्चर कर सकते हो या फिर उनको मतलब ऐसा माउंट यूज कर सकते हो. मुझे नहीं लग रहा गेम में है ऐसा कुछ. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know.
Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. What should we do with the egg? Do you think the poachers will retaliate? Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. आई गेस नए मिशन के आने का टाइम हो गया। सेबेस्टियन का आउल भी नहीं आया अभी तक। कुछ तो आएगा, क्योंकि जो भी मेन चीज़ें थी अपन ने कंप्लीट कर ली। It's time you learned the transformation spell. Oh, nice. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल, आई थिंक येलो वाला स्पेल है, जो एक फाइनल येलो वाला स्पेल बचा है। कलेक्ट अ फील्ड गाइड पेज इन द अंडरग्राउंड हार्बर। ये कहाँ पे? कलेक्ट फील्ड गाइड पेज फ्रॉम द बुक ऑन इंटरमीडिएट ट्रांसफिगरेशन इन लाइब्रेरी। ये दोनों ही अपन ने किए नहीं है, मैप पे देखना पड़ेगा किधर किधर है। एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल का एक बढ़िया सा अपग्रेड है जो मैं लेना चाहता हूँ। तो पहले स्पेल सीखते हैं, उसके बाद अपग्रेड उठाते हैं। लिफ्ट है क्या ये? ओके, यहाँ पे मैं पहले कभी गया नहीं हूँ, मुझे पता भी नहीं था लिफ्ट है यहाँ पे ऐसा कुछ। So this is the underground harbour. Revelio. दूसरा लाइब्रेरी से एक उठाना है। असाइनमेंट एकदम नॉर्मल सा था, कुछ इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये वाला फास्ट ट्रैवल अनलॉक क्यों नहीं किया मैंने अभी तक? रूमर्स हैज इट दैट समंथा डेली इज हैविंग अ प्रॉब्लम विद हर ब्रदर विलियम। अच्छा, ये साइड मिशन एक दूसरा।
वो एक elf. That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. जैसे ही अपन पास आते ही गायब हो जाते. Revelio. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Professor Weasley asked me to get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Okay, let's see. अपन को आता है A कि quiz नहीं. sounds like fun. Splendid! Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? हैं? मुझे नहीं पता ये. The Golden Snidget. Correct! Lol. The Snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? ये शायद पता है. पहला वाला ये शायद. Felix Felicis. ये तो हैरी पॉटर के मूवी में भी था. Felix Felicis. Well done! Yes. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? ये नहीं पता. डेडली हैलोस. हाँ ये वही है ना. मुझे बस ये नहीं पता कि डेडली हैलोस के जो तीनों कैरेक्टर्स थे स्टोरी के वो ब्रदर्स थे. आई गेस ब्रदर ही थे, जिसने एक ने छड़ी सबसे पावरफुल वॉन्ड मांगा था, दूसरे ने वो अदृश्य चोगा मांगा था एंड तीसरे ने फिलोसोफर स्टोन मांगा था. The Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. वही है. Which ball in Quidditch is the largest? स्निच तो सबसे छोटा है. बर्डग्लर वो है जो खींच के मारते हैं ना एक दूसरे को. आई गेस क्वाफल होगा सबसे बड़ा. The Quaffle. That's right. Yep. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. पता नहीं मुझे. ट्रू जाता. True. Actually, the answer was false. While नहीं पता. Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. I guess I जिन put लोगों the ने book back on the pedestal for you. जिन लोगों ने बुक्स रीड किया होगा ना हैरी पॉटर को, उनको ज़्यादा आंसर्स पता होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बुक्स मूवीज से ज़्यादा कवर करती है Professor चीज़ें. Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. आई गेस पास में ही है यहाँ पे. ये वाला अनलॉक नहीं था फास्ट ट्रैवल. अरे हाँ. टाइम चेंज करना पड़ेगा. My mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to.
I'm hoping she may be easier on me if you are there. Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Beautifully done. नाइस ट्रांसफिगरेशन। आई गेस बम्बार्डा को उठा के यहाँ पे डालते हैं एंड यहाँ पे ट्रांसफिगरेशन डालते हैं। यप, हाँ, ट्रांसफिगरेशन के एक अपग्रेड उठाना था। वो अपग्रेड काफ़ी बढ़िया है। मेनली होता ही है कि जब तुम ट्रांसफिगरेशन स्पेल यूज़ करते हो वो रैंडमली कोई भी नॉर्मल बैरल में बदलते हैं, बट ये अपग्रेड तुम ले लोगे तो एक्सप्लोडिंग बैरल में बदलते हैं। एंड एक्सप्लोडिंग बैरल कितना डैमेज करता है तुम्हें पता है, और नॉर्मल एनिमीज़ के ऑलमोस्ट 75% हेल्थ लेके गायब होता है वो। तो काइंड ऑफ सही है। जिसको तुम बैरल में बदल रहे हो वो तो मर ही गया, जिस पे फोड़ रहे हो वो भी ऑलमोस्ट गया है। ओके, 4 पॉइंट मैंने बचा के रखे हैं। एक तो ये आवरा के डाबरा का अपग्रेड लेना है, एक इम्पीरियो का अपग्रेड लेना है। उसके बाद ये हेल्थ वाला लेना है कि नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि तुम जब कर्स्ड एनिमीज़ को हराते हो तो तुम्हें थोड़ा सा हेल्थ मिलता है। कैन बी यूज़फुल, देखते हैं वो। लेकिन ये दोनों तो कंफर्म लेने इसके लिए बचा है मैंने। बाकी स्टेल्थ पे मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लिया है। कोर में जो भी लेना था सब कुछ ले लिया, अभी एक्स्ट्रा वाले बचे हैं। पोशंस वाले में मैंने 2 उठाए। एक अपने ये प्लांट का रेंज एंड डैमेज बढ़ाने का, ये वाला जो रूट है अपन जो यूज़ कर रहे हैं। दूसरा ये एडोरस पोशन जो अपन को इनवल्नरेबल बनाता है। तीसरा मैं ये फोकस पोशन का अपग्रेड उठा लूँ सोच रहा हूँ, बट फोकस पोशन मैंने अभी तक एक भी बार यूज़ नहीं किया है गेम में। You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed, and frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making excellent use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your extended conversation with Mr. Ollivander after you'd obtained your wand, or subsequent search of the owlery, connected in any way to Professor Fig? Professor Fig has encouraged me to explore when I can in an effort to complete my field guide. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. OWLs basically end term exam session. हैं ये क्या है? Okay, so since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych.
Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. 3 मैसेजेस आए अब चौथा आया 1 सेकंड वो भी देख लेते हैं. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there. लॉर्ड Bring गॉक someone वाला who मेन speaks मिशन होगा. gobbledygook. और कुछ okay, let's see. So meet Sebastian by the Overlook. So Sebastian वाला मेन मिशन है, लॉर्ड गॉक का मेन मिशन है, नैटी वाला साइड मिशन है एंड पॉपी वाला साइड मिशन है. बट ये सारे अपन करने वाले हैं. तो तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो 3 स्टूडेंट्स अलग अलग हाउसेस के तुम्हें काइंड ऑफ एक मेन साइड मिशन के लिए डाले गए. सेबेस्टियन हो गया स्लिथरिन का, पॉपी हो गई हफलपफ की एंड नैटी ग्रिफिंडोर से. तो आई गेस अगर तुम कोई दूसरा हाउस लोगे तो कोई तुम्हें रेवेनक्लॉ का मिलेगा, जो इन ये तीनों में से कोई एक आधा साइड क्वेस्ट करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है. एनीवेज और क्या चीज़ है अपने पास, एक बार मैप पे देखे. मैप पे जो रैंडम दूसरे साइड क्वेस्ट है ना वो दिखेंगे. ये वाला साइड क्वेस्ट अपन एक एपिसोड रैप अप करने से पहले कर सकते हैं. मुझे लग नहीं रहा बहुत बड़ा साइड क्वेस्ट होगा, क्योंकि वो तुम्हें ऐसा अपने आउल के ईमेल वगैरह से नहीं है. जो आउल के ईमेल से आते हैं वो साइड क्वेस्ट अच्छे से डिज़ाइन किए हुए, थोड़े से ब्रीफ एंड बड़े साइड में क्वेस्ट होते हैं वो. तो वो सारे अपन वॉक थ्रू में कवर कर रहे हैं. I'm most pleased. Oh, it's you! Samantha, is everything all right? No, it's not. It's my brother William, the one I told you about after Charms class. He's been cursed. He ignored my warning and now he's lying in St. Mungo's looking completely pathetic. He simply never listens. I'm sorry, how exactly has he been cursed? Oh, you won't believe it. Truly, but his feet were turned into purple beets. You can imagine his distress. And mine. I won't even go into the attention he was getting from our garden rabbits before he admitted himself to hospital. I'm so sorry. That sounds like a trying situation. I'm glad you understand. Everyone else just laughs at me as if it's a joke. No compassion at all. Well, it is an unusual situation. How did your brother end up like this? It's entirely his own fault. I told him about some research I'd done recently on our ancestor Marmaduke Dale. In particular, my discovery that Marmaduke's tomb was cursed. My brother's always making fun of my discoveries. This time, he laughed in my face. Told me I'd misinterpreted my findings. As if that were possible. And to prove his point, he went right up to the entrance of the tomb and poof! His feet transfigured into beets. How awful. I can see why you're upset. He definitely needs some help. Exactly. He may be a cape flapper, but he's still my brother. And no one deserves such a fate to last forever, especially as the result of a single brainless mistake. Now I worry that if the curse isn't reversed, it could become permanent. Can't the curse be broken? Possibly. The curse stems from a crest that was stolen from Marmaduke. If the crest were returned to its rightful place upon his sarcophagus, then I believe that William's feet may be restored. You battled trolls when they attacked Hogsmeade, escaped a dragon, and I could tell by your work and charms that you're a skilled spellcaster. Returning a crest to a sarcophagus should be almost effortless for you. So, will you help us? I can take the crest to Marmaduke's sarcophagus for you. Oh, thank you! Thank you so much! You'll simply go into the tomb where Marmaduke was laid to rest and place the crest on top of his sarcophagus. According to my research, the tomb's been abandoned for centuries, so it should be a fairly simple task. You'll find it just east of the hamlet of Brockborough. Okay, मुझे लग रहा है इन्फर्न नहीं होंगे शायद वहाँ पे ना, वो जो ज़ॉम्बी टाइप के होते हैं. देखते हैं. बीट्स मतलब क्या बीटरूट बन गया क्या उसके पैर? मुझे वही लग रहा है. बीट्स पता नहीं कुछ और मीनिंग है क्या बीट्स का, बट आई गेस वो बंदे के पैर बीटरूट बन गए ऐसा कुछ है. I need to find the tomb near Brockborough and place Samantha's family crest on a sarcophagus there.
Wonder if I'm safe to explore in there. वो किसका फोटो था? आई गेस वो एस्काबैन का फोटो था अभी जो कट सीन में है ना। और एस्काबैन एक्चुअली गेम में है एक छोटे से मिशन के लिए, लेकिन उसके लिए तुम्हें हफलपफ में होना पड़ेगा। सो बेसिकली तुम्हें याद होगा अपन ने एक मिशन किया था जिसमें अपन ने जो बुक के मिसिंग पेजेस है उसे डिस्कवर किया था एंड उसके बाद अपन को मैप रूम मिला था। तो वो मैप रूम वाले मिशन से जस्ट पहले वाला जो मिशन है ना वो हर हाउस के लिए अलग है। तुम्हें याद होगा अपन आउलरी में गए थे जहाँ पे अपन को एक गोस्ट मिला था, उससे अपन ने बात की थी, जहाँ पे आउल्स वगैरह रहते उधर गए थे अपन। तो ये रेवन क्लॉ का मिशन था, बाकी हर एक हाउस के लिए कुछ अलग मिशन है। तो हफलपफ वालों के लिए एस्काबैन वाला मिशन है, थोड़ी देर के लिए वो लोग एस्काबैन जाते हैं। तो अगर आपको एस्काबैन देखना हो गेम में तो आप हफलपफ ले सकते हो। Should have known a herbologist would use Devil's Snare. ओह फाइनली एक ग्रीन एरो वाला गियर मिला काफ़ी टाइम बाद। इतना ज़्यादा है बट उसका डिफेंस +8 डिफेंस +6 उससे अच्छा तो फिर यही है। ये मुझे 6 ऑफेंस भी दे रहा है। लेवल 28 है ये, लेवल 31 लेवल 31। Confringo. Bombarda. Lumos. A troll? You can't be serious. रोल पे एक पीछे से जाके एक वो अटैक मारता है जो उसकी थोड़ी सी एचपी कम कर देगा। Incendio! Expelliarmus! Glacius! Defender! Protego! Descender! Crucible! Bombarda! Confringo! Oh shit! अभी अपने पास इतने सारे स्पेल्स है, ट्रोल अकेला 1v1 तो कुछ इतना दिक्कत नहीं है अभी। अगर उसके साथ और एनिमीज डाले तब थोड़ा सा चैलेंज बनेगा और कुछ नहीं। वहाँ पे कुछ है, लूट होंगी। Marmaduke certainly left behind more than plants. Bombarda! वो ये आई गेस वापस जाने का रास्ता। हाँ ये रहा उसका ग्रेव। That should reverse the curse. Hopefully.
उतना बड़ा मिशन नहीं था, मैंने बताया ना, जैसे कि जो ईमेल से मतलब आउल मेल से आता है। If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help me, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. या ईमेल बोल दिया, सॉरी, आउल मेल से जो आता है ना वो मिशंस इंपॉर्टेंट रहते हैं। सेबेस्टियन के 2 मिशन आएंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक तो मेन मिशन आया मीट सेबेस्टियन ऑन द ओवरलुक एंड मीट सेबेस्टियन इंपीरियो मिलेगा, तो ये वाला अपन अगले एपिसोड में पहले करेंगे। एक सेकेंड, हाँ ये रहा रास्ता, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं। Samantha will be glad to hear that the crest has been returned. I certainly hope it reverses the curse. ऑफ स्किन, इसको पकड़ो। Levioso! ये कौन सा चीज दिखा रहा है ये? कोई दूसरा मेन मिशन ट्रैक कर रहा था। How nice to see you, my young friend. I'm happy to tell you that I returned the crest to Marmaduke's sarcophagus just as you asked. I thought as much. I received word from St. Mungo's that my brother's feet are back to normal. No more beats. Oh, I cannot thank you enough. It wasn't too much trouble, I hope. Well, there was a troll in the tomb. A troll? Oh dear, I'm so sorry. That's awful. No one has been in that tomb for centuries. But I can't say I'm surprised. Marmaduke seems to have been full of surprises. Indeed he was. Well, I suppose I should be going. I'm anxious to see my brother, who must be elated to have his feet back. Of course. I certainly would be. William and I are forever in your debt. Okay, Thank there you we again go. for what you So did. छोटा सा अपन एक साइड मिशन कंप्लीट किया। एनीवेज अपन अगले एपिसोड में मेन स्टोरी के मिशंस कंटिन्यू करेंगे। सेबेस्टियन के मिशन भी कंटिन्यू करेंगे जो साइड मिशन वाले हैं, क्योंकि उससे तुम्हें अनफॉरगिवेबल कर्सेस मिलता है जो कि काइंड ऑफ गेम के सबसे कूल स्पेल्स है। सो या एनीवेज सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड। आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक ठोकना मत भूलना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।